Students, welcome back to TMI's home-based education. Now, today onwards, we are going to start with new chapter, that is chapter number 11, area and perimeter and area. As I told you in the Google Meet also, if the conditions will be such that if you are going to come to school, then we'll start with construction in the school only. Otherwise, for that also I have to make the video. So before that, we have to complete this perimeter and area. Perimeter and area, I know you are studying from class 5th, 4th and 5th, 5th, 6th, now and again 7th. The process is same. Perimeter, you are knowing perimeter means the sum of sides. In that we had studied about perimeter of square, perimeter of rectangle, perimeter of triangle also we had studied. Then if we come to area, area means the inner portion between the boundaries. So boundaries के बीच का जो area, like this board is being there, so its area is this green part. That is the area of the board, and for that we know the formula: area of square is side into side, and area of rectangle is L into B. So just again I am writing the formulas, and after that we will start with the exercise. So perimeter of square, it will be 4 into side. Then perimeter of rectangle, that will be equal to 2 into L plus B. Then area of square, that comes to side into side. Then area of rectangle, that comes to L into B. A perimeter of any figure, you know, if we are not knowing, like square and rectangle are there, we know 4 into side and 2 into L plus B. Triangle है तो 3 into side. If it is an equilateral triangle, अगर अलग-अलग sides है like scalene triangle, then sum of sides. So if any figure or anything where we don't know particular formula, perimeter means what? Adding the side of that figure. So in short, perimeter means sum of sides only. Area means the inner portion of the boundary. So these are the 4 formulas which will be required for the first exercise on page number 208. So without wasting time, let us start with the exercise only, because there is no much explanation over here. So if we begin with exercise 11.1, question number 1, you can see in your textbook, the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of the land, if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. Now square है तो unit क्या होगा? Meter, centimeter, kilometer, like that. But when we will find out area, the unit will become square. So as here we have to find out area. Length and breadth of rectangular piece of land is being given. So statement, as you all will be remaining, length of rectangular piece of land लिखने की जरूरत नहीं है, only land, that comes to 500 meter. Then breadth of rectangular land, that comes to 300 meter, and therefore the first one which we have to find out, that is the area. So area of rectangular field, the formula we have to use, that will be L into B. So 500 into 300, so the answer comes meter square. 5 3s are 15 and 4 zeros we have to
add. Now second one, it is being given that the cost of the land, if 1 meter square of the land costs rupees 10,000. So cost of 1 meter square land is equal to rupees 10,000, that is being given in the question. So we are having 1,50,000 meters square. So what will be its cost? So therefore cost of 1,50,000 meters square land will be equal to what, that we have to find out. So 1,50,000 into 10,000. So 4 zeros of here and 4 of there. So this will be the cost of that land which we have to find out. So here by here the first answer gets complete. Now second one, find the area of square park whose perimeter is 320. Perimeter दे दिया है, find out क्या करना है, area. So very simple. फर्स्ट पेरीमीटर दिया है तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, साइड फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज स्क्वायर इट इज. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 320 मीटर. So now we are having perimeter, तो उस पे से हम side find out करेंगे and then we have to find out the area. So side is equal to what? Perimeter upon 4. जो भी perimeter है उसको divide by 4 करो. So 320 divided by 4. So 4 ones are and 4 eights are is 32 0. So it will be 80 meter. 80 meter is the side of the square park. Side of square park is equal to 80 meter. और उसके बाद क्या find out करना है, उसका area, and that you have to find out. I am not going to do area of square park is equal to side into side. So side I have already found 80 meter, and that you have to find out by yourself. That is the remaining part of the question. Third one, if we do, find the breadth of the rectangle of a plot if its area is 440 meter and the length is 22 meter. Also find its perimeter. So area is being given, then length is given, breadth find out करना है, उसके बाद उसका perimeter भी find out करना है. So again the half sum I will do it, half you have to do it. Even though अगर नहीं करूँगा तो भी अपने आप हो जाएगा. It's not that much hard. Third one, the length of rectangular plot is given. So length of a rectangular plot that is given as 22 meter. Then area is given, area of rectangular plot is equal to 440. So length is there, area is there. एरिया के फॉर्मूला में उसको पुट अप करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू डू इट. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L into B. So area we are having 440 is equal to length is 22 into breadth, and therefore cross multiplication से it will come in division. So 440 upon 22. So 22 ones are and 22 20s are. So 20 meter breadth we are getting. Now the half I had done.
the half part you have to do it. उसमें find out क्या करना है, perimeter भी find out करना है. So length you are already having, breadth हमने find out किया. Just put the formula 2 into L plus B and find out the perimeter. Fourth one, the perimeter of a rectangular plot is 100 centimeter. If the length is 35 meter, find its breadth. Also find its area. Okay, so here again I have to do it half part because थोड़ा बहुत भूल गए होंगे ना. Perimeter is being given, no problem. We simply just don't copy down from the note video. After reading the questions, simple questions are being there. Still I am doing half of it. First one तो पूरा कर दिया. Second half I had done. Third also half I had done. Half I will do. Fourth one also half only I will do. The rectangle length is being given. The perimeter of rectangular sheet. So length of rectangular sheet that is given as 35 meter. Now perimeter is given. Perimeter of rectangular sheet is equal to 100 meter. Sorry, centimeter. No. So centimeter. Now we'll use the formula. Therefore, perimeter of rectangular sheet is equal to 2 into L plus B. Now perimeter we are already having 100 is equal to 2 into length we are having 35 plus B. Now this 2 here in multiplication will go in division here. 100 upon 2 is equal to 35 plus B. Now just cancel it. 2 ones are and 2 50s are. So it will come 50 is equal to 35 plus B. Now the equation is being formed. Just solve it. Therefore B is equal to 50 minus 35. So it will come as 15 centimeter. So length is there, breadth we have find out. अब क्या find out करना है? Area. So that part you will do it by yourself. Then so half part I have done. Fifth one, the area of a square park is the same as of a rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. क्या बोल दिया देखो? Area of square park is equal to the area of is same as the rectangular park, means दोनों का area क्या है? Same है. That is given. If the side of square park is 60 meter, square park की अगर side 60 meter है और rectangular park का length जो है वो 90 meter है, find the breadth of the rectangular park. वो हमें find out करना है. So first, as the side of the square park is given, what we will find out first? Area of square park. Area of square park मिल जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि the area of square park is equal to area of rectangular park. तो दोनों का एरिया सेम आएगा. फिर उसमें से लेंथ दिया है and breadth we have to find out. Okay. So first question number 5. So side of square park is equal to 60 meter. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? Therefore area of square park is equal to side into side. So it will be 60 into 60. That comes to
मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया मिल गया स्क्वायर पार्क का। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मींस दोनों का एरिया सेम है। सो वी कैन राइट दैट देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू करके लिख देना कितना 3600 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन नाउ व्हाट इज बीइंग गिवन, द लेंथ इज बीइंग गिवन। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क that is given as 90 meter. So again the half part you have to do it. अब एरिया तो हमारे पास है, so therefore area of rectangular part is equal to L into B. Now area will take how much, 3600, length is given 90 into B. Do cross multiplication and find out the answer. Question number 6 is being given then. A wire is in the shape of a rectangle. एक wire है जो rectangular shape में है. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. देखो एक वायर था, पहले वो रेक्टेंगुलर शेप में था, तो उसकी लेंथ कितनी थी 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर वाज द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब वही वायर को रेक्टेंगुलर शेप में से निकाल के उसको स्क्वायर शेप में किया। तो अब स्क्वायर शेप में करने के बाद उसकी साइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद दोनों में से किसका एरिया बड़ा होगा, दैट आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज़ रेक्टेंगल था, अब उसमें से क्या किया, वायर तो सेम था, पहले रेक्टेंगुलर शेप में था, अब वही वायर को शेप क्या दे दिया, स्क्वायर। तो वायर की जो लेंथ थी वो तो सेम, मतलब जो पेरीमीटर हम रेक्टेंगुलर वायर का फाइंड आउट करेंगे वही स्क्वायर का भी होगा। फिर उसमें से साइड फाइंड आउट हो जाएंगे और फिर दोनों का एरिया भी फाइंड आउट करना है, एंड देन we have to compare that whose area is greater. The sums are very simple, just it is given in different ways, that's it. बाकी सब कुछ सेम है। Now question number 6 we say length of wire is equal to 40 centimeter, then breadth of wire that comes to 22 centimeter. अब ये जो वायर पूरा था उसको रेक्टेंगुलर शेप में करने के बाद this is the length and breadth. Now we'll find out the perimeter. So perimeter of wire will be 2 into L plus B. So 2 into 40 plus 22, that comes to 2 into 62, which is equal to 124 सेंटीमीटर। ये वायर का टोटल पेरीमीटर हो गया है। नाउ अब ये वायर जो था उसको ही स्क्वायर शेप दिया, तो पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, वायर की लेंथ थोड़ी कम ज्यादा होगी, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में था, आप उसको स्क्वायर शेप में कर दिया, दैट इज द डिफरेंस। वायर सेम था, जितना लंबा था वो ही रहेगा, जस्ट उसको स्क्वायर शेप देना है। सो द पेरीमीटर विल बी सेम। तो यहाँ पे कैसे एरिया सेम लिखा था, हियर वी विल राइट डाउन द पेरीमीटर, देन देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ rectangular wire will be equal to perimeter of
स्क्वायर वायर वो भी कितना होगा 124 सेंटीमीटर की होगा। अब उसमें से हमें क्या करना है, we have to find out the side। पहले साइड तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, स्क्वायर की कितनी साइड होगी। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। नहीं तो डायरेक्टली जो हम करते थे वही करो, इट्स बेटर, इट विल बी सिंपल दैट, क्योंकि साइड ही फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है। सो p अपॉन 4 अप्लाई करो, 124 बाय 4, सो 4 1s are 3s are and 1s are, तो आंसर विल कम 31 centimeter. This is the side of the square shaped wire which is being formed. अब बाकी का हाफ पार्ट you have to do it। उसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करो, स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू कंपेयर दैट हुज एरिया वो एनक्लोजेस मोर एरिया। स्क्वायर शेप में जो फॉर्म किया था वायर को वो ज्यादा एरिया ले रहा है, या स्क्वायर शेप में जो फॉर्म किया वो ज्यादा एरिया ले रहा है। सो दैट रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 7 that I am not going to do, that you have to do it by yourself. The perimeter of rectangle is 130. Perimeter of rectangle is 130 and breadth is given। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। जैसे इसके पहले वाले सम में भी हमने फाइंड आउट किया था ना, 2 को मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में लेके आए थे, लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, और उसके बाद उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। दैट मच थिंग इज बीइंग देयर इन क्वेश्चन नंबर 7। Now the last question of the exercise, that is question number 8। In question number 8, what is being given, that a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and 3.6 meter। Figure में दिया है, see in your textbook on page 208 at the last। Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square। अब एक वॉल है, if you can see in the figure, उसमें एक डोर भी है, डोर की लेंथ और ब्रेथ दिया है, वॉल का भी लेंथ एंड ब्रेथ दिया है। अब व्हाइट वॉश मतलब कलर कहाँ पे करना है, वॉल पे ही करना है, तो उसका कितना चार्ज लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, तो वो व्हाइट वॉश करने के लिए पूरा कितना कॉस्ट होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब व्हाइट वॉश कहाँ पे करना है, सिर्फ वॉल पे करना है, डोर पे नहीं करना है। सो दैट व्हाट वी हैव टू डू, डोर का एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है, एंड फ्रॉम द एरिया ऑफ वॉल डोर के एरिया को माइनस कर देंगे। सो जितना भी एरिया आएगा उतने एरिया में क्या करना होगा, व्हाइट वॉश करना होगा, और उतना उसका कितना कॉस्ट होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देन तो वॉल है, वॉल में डोर है, कलर वॉल पे ही करना है, डोर पे नहीं करना है। सो कितना एरिया है जिसमें कलर करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले पूरी वॉल का एरिया फाइंड आउट करो, डोर का एरिया फाइंड आउट, सब्ट्रैक्ट इट, जो माइनस करके आएगा उतने एरिया में क्या करना है, कलर करना है। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, तो वो पूरा करने के लिए कितना कॉस्ट होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। So as first door is given, so let us begin with door only। So length of door is given 2 meter, breadth of door is given 1 meter, and therefore area of door is equal to length into breadth, 2 into 1, that comes to 2 meter square। So ये डोर का एरिया होगा। Now let us start with wall। So length of wall, it is 4.5 meter and breadth of wall, that is 3.6
6 meter, and therefore area of wall is equal to length into breadth. So that will be 4.5 into 3.6. Now just multiply and find out 45 and 36. 6 5 is 30, 3, 6 4 are 24, plus 3 27, 15, 1, 13, so 0, 12, 6. After 0.2 digits are being there total, so the answer will come 16.20 meter square. तो ये होता है wall का area. This is of door. Now what we have to find out is we have to find out the area जहाँ पे whitewash करना है. So what we will write now? Right. Therefore, area of wall to be whitewashed is equal to area of wall to be whitewashed. तो area of wall कितना आएगा 16.20, उसमें से 2 माइनस करना है, so it will come as 14.20 meter square. Now again same the rest of the part you have to do it by yourself. क्या करना है आप उसमें just cost of whitewashing 1 meter square is equal to ₹20, and therefore cost of whitewashing 14.2 or 14.20 meter square, it will be how much? So just multiply 14.2 into 20, so you will get the answer. So again the last part you have to do it by yourself, and by this we complete the first exercise of your 11th chapter. जो आधा मैंने किया है, that remaining half you have to do it by yourself. See you in the next video with area of triangle and parallelogram. So till then, thank you and